Hello everybody, Namaskar and good morning. How are you all? Hello, am I audible and visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Is here Shahi, Breshi, Isha, Krishil, Milan, Tirthak, Vihan and Jas. Okay, are you ready to learn computer subject? Yes, ma'am. Which chapter is going on? Yes, ma'am. Okay. Vihan, will you please tell me in previous class which chapter we on? What is the name of that chapter? Nobody knows? Ma'am, introduction to Microsoft. Ma'am, chapter 3, introduction to databases. We are completed last time. इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट. हाँ जी. क्यों इतना टाइम लगा? टेक्स्ट बुक में साइन कर रहे थे, राइट? राइट विहान? Yes, ma'am. राइट विहान? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very nice. Okay. Which software we use in that chapter? Ma'am, Microsoft Access. Yes, Microsoft Access. Have you downloaded that software in your computer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who was facing the problem in last week? Yes. Okay, well done. Have you done practice of creating the table? Yes, ma'am. Well done. Isha, have you done practice in your computer? Yes, ma'am, I have done. Okay. How many reports you added? Ma'am, 8 to 9. Ma'am, 8 to 9. 8 to 9. Do you have a PC now? Yes, ma'am, I would be having it. Can you mail that? Table? Okay, ma'am, I will. Okay. Do you have my email ID? Yes, ma'am, I have. Yes, ma'am. Okay. Please mail. I'm opening my mail ID. Okay. Everybody, please reply. How many views are there in that chapter? Ma'am, what you said, can you repeat? You have how many views are there? Ma'am, Are you able to see my screen? Okay, let me open this. Rest all students, open page number 49. We are going to solve the exercise of this chapter.
Okay, so textbook exercise will read by, which is given on page number 49. Khush Adroja. Khush, are you available here, beta? Hello, Khush. Hello. Okay, Jess Patel. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Will you please When read you exercises? create a new blank database, Wait 1 minute, I'm muting myself also. You have to read till 5, okay? Okay. When you create a database, its default name is database1. Which view allows to add field description to set properties for field. Option A, database, datasheet view. Option B, design view. Option C, print view. Option D, database view. Option D, design view. Third, the default name of the table is option A, new table. Option B, table. Option C, table 1. Option D, view 1. Option C, table 1. The field name is Don't give answers. You have to read only questions. okay. The field name in SQL table can be option A 46 characters, option B 26 characters, option C 160 characters, option D 64 characters. In a table, when you insert a OLE object, it is displayed as package, object, photograph, or OLE object. Ma'am, MCQ is done. Yes, beta. Thank you so much. Everybody, try to solve this MCQ. What is the answer of first one? Ma'am, Database 1. Okay, let's check. Yes, ma'am. Database 1. Yes, correct answer. You have to reply your answers in chat box, beta. Now, what is the answer of second one? Design view. Design view. Yeah, absolutely right answer. What is the answer of third one? Everybody try to reply. If you have any query, then you can ask. Yes, table 1. It's a very simple questions they ask in the exercise, right? Next, fourth one. 64 characters. Better reply in chat box for 64. Okay, let's see. Yes, correct answer. 64. Next, please. OL object. Only object. In table, when you insert it's displayed effective. One minute, huh? Isha, have you tried to insert OLE object in your table? No, ma'am, I forgot that. It's okay. Have you mailed that? Ma'am, I will mail after this lecture. Okay, no problem. But actually, I want the table. That is why I was asking. Ma'am, Now, beta. ma'am, how to share in an email? How to share?
Okay, let's do continue with the filling blanks. This will read by Rishi. Rishi. See, OLE object, if we talk about the fifth one, then the correct answer is package. If you want to find the answer, then you can see on page number 44. Here, last point is given related to this. Right? For picking the photograph as OLE, click in the blank area in the resulting window. Check on the button create from file, then click on browse button to browse to your folder and pick the desired photograph. On screen access will display package in the last field. Right? If you are able to see, they have not added photograph here also, but if you try, then you can see package is written there. So correct answer is this one, right? Filling the blanks will read by Rishiv. Are you available here, beta? Just will you please do your mic off? Kevin, Yes, sir. Kevin. Hello, Kevin. Okay, Lakshya Patel. Lakshya beta. Yes, ma'am. Will you please read this page number 50, filling the blanks? Okay, ma'am. Access allowed table creation by using either I'm dash using myself. or the dash view. A dash view helps to enter and display data and insert and delete or rename or move a field in an existing table. Third one. The very first field by the default is auto created by the name. Its the data type is dash. Fourth one. In the case of the field set as a primary key, has the data type set as dash. The column keeps generating a unique ascending number. Fifth, primary key is set during the dash design. Okay, thank you so much, Pita. Okay, are you ready for the answers? What is the answer of first one? Access allow table create by using either dash view or dash view. They are asking the name of two views. What is that? What is the answer of first one? Design view and datasheet view. Yes, absolutely correct answer. Let's tell me the answer of second one. If you have any doubt in any filling the blank, then you can ask me. Huh? Datasheet, yes, absolutely correct answer. Next, third one. Answer of third one. Very first field, ma'am, I don't have my textbook. I will find it. So, ma'am, it is okay that I don't teach for today. Yeah, it's okay, fine. What is the answer of third one? It's the ID, right? Because first हम कोई भी default field type करेंगे, that is ID, and its data type is auto number. अगस्त्य के कहने पर हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था ऑटो नंबर. इफ यू रिमेम्बर देन दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. Yes, ma'am. Okay, what is the answer of fourth one? Fourth one. What is this? Yes, correct answer, auto number.
primary key and data type of this is auto number. Next, fifth one, primary key is set in the dash view. If you remember that when we type the headings of the table, at that time we create primary key. So correct answer is database. Isha, they are asking view, design view or database view, data type view. Right? So when we generate the database, and without ID and auto number. Yes, please ask. Anshika. Mama, I have doubt in third one. Okay. Field by default is auto-created by the name ID. If you remember, if you had done practice at home, then when they create any table, suppose let me show you. Let's go in new, and no need to be going new, but I'm just generating another table, right? So if you are able to see, then automatically they are taken ID. Okay, and let's go in table 3, design view. Are you able to see this? I just created table 3, field name is ID, that is already this set as the primary key and the data type is auto number. Yes, directly aa jata hai. If you want to add it in this, then you can. But by default, they are taken ID and the data type of this ID is auto number. Understood? Means third answer is ID. Third answer. There are 2 blanks in third. अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी एरर है. नेम उसके बाद ब्लैंक नहीं दी है. A very first field by default is auto created by name. Here. And its data type is auto. Right? Here you have to write ID. Okay, let's move on exercise C. Janil Borania, will you please read this to us? Yes, ma'am. First, the data types determine the kind of values that users can store in the fields. Second, when you insert a new field in a table, it is always inserted after the current field. Third, if you accidentally delete a required field, you will lose all the data for that particular field. Fourth, any record inserted in a table with a primary key will be located physically as the last record. Fifth, SS allows you to repeat the primary key number of an earlier deleted record. Okay, thank you so much. Janil, I guess you were facing a problem in Microsoft Access in last period. Have you solved it? Hello? Hello? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. 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 So what is the answer of first one? Any guesses? False? Okay, let's check. The data type determines the kind of values that users can store in the field. This is true because suppose if you want to enter the date of birth, then we have to choose the data type date and time, right? So it can determine which kind of values we can enter. Suppose if we choose phone number, then in that field we require number. So we can enter only numbers. So users यानी हम जो टाइप करेंगे डेटा बुक
उनको किस टाइप के डेटा एंटर करना है, दैट विल डिसाइड बाय द डेटा टाइप. अंडरस्टूड? विहान, अगस्त्या. Okay, second. What is the answer of second one? True. Let's check. When you insert a new field in table, it is always inserted after the current field. No. जो आपकी करंट फील्ड है उसके बीच में भी आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, राइट? But ma'am, we have tried, it was not inserting there. Yeah, but we can, because हम लोगों ने जो डेटा टाइप चूज की थी वो ऑटो नंबर था. तो एक बार एक नंबर जनरेट हो गया, सपोज 1 2 3 4 5 6, राइट? बट अगर 3 नंबर ऑलरेडी जनरेट हो गया, उसके बाद मैंने वो एंट्री डिलीट की, अगर आपको याद हो तो फिर एक बार आपने वो एंट्री ऐड कर दी, पर उसके बाद भले ही डिलीट की हो, बट वो नंबर दूसरी बार वो ऐड करने नहीं देगा. ठीक है? अगर आपने ऑटो नंबर की जगह रैंडमली कोई भी डेटा टाइप चूज किया होता तो ये हो जाता. आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल टू यू एग्जैक्टली? ठीक है? तो जब आप डेटा टाइप ऑटो नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, तब एक बार एक नंबर जनरेट हो गया, फिर उसकी एंट्री भले ही आपने डिलीट कर दी हो, बट वो एंट्री आपको दूसरी बार करने नहीं देगा. जैसे कि लेट मी गिव वन एग्जांपल. सपोज आपके क्लास में रोल नंबर दिए जाते हैं, राइट? तो बीच में से 21 रोल नंबर क्लास में से निकल गया है सपोज, तो फिर कोई न्यू कमर आता है, उनको हम 21 रोल नंबर नहीं देंगे. सपोज आपके क्लास की स्ट्रेंथ है 30, तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो आएगा उनको 31 ही देना पड़ेगा. वो 21 वो जो चला गया है वो स्टूडेंट के लिए यूनिक रहेगा. ठीक है? नेक्स्ट प्लीज. थर्ड वन ट्रू. यस, थर्ड वन इज ट्रू. एनी डाउट इन थर्ड वन? No. Okay, what is the answer of fourth one? Yes, this is also true. Fifth one. Fifth one. Access allows you to repeat the primary key number of an earlier deleted record. False, because we cannot repeat this primary key, right? Now, if you want to do practice at home, then in this exercise, you can see one table is given. You can create this table in your PC, and here they have given data type and ID, right? You can type this in your computer. You can enter 5-6 records, so you can do practice at home. Hanji? Can we do now? No, beta. Now I am going to start chapter number 5. In this chapter, more on Microsoft Access. बेटा, अगर आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रॉपरली स्टडी करना है तो वी रिक्वायर मोर टाइम, बट आपके सिलेबस में पर्टिकुलर थोड़ा सा ही एंट्रीज वगैरह दी हुई है. आपने अगर नोटिस किया हो तो कोई ऑप्शंस के ही यूजेस आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो हम उतना ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो what we are going to learn in this chapter, creating a query using design view. As I told you that ma'am, I have a beta, whenever you download Microsoft Office or Janice, which operating system you are using? I have shared screen also. बेटा, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हो ना, उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है. बट आप एक बार गूगल करके ट्राई कीजिएगा, अगर आपको सेटअप मिल जाता है तो ठीक है. ठीक है?
It is freeware software, so might be it is available on Google. Right, now let's talk about creating the query using design view. अगर आपको एक्सेल प्रॉपरली आता है तो अगर एक्सेल में कंट्रोल एफ करके कुछ फाइंड करेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा. तो हम इसमें यही करने जा रहे हैं, बट कंट्रोल एफ इज नॉट यूजेबल इन दिस, सो वी यूज वर्ड क्वेरी. जैसे कि सपोज इफ यू हैव अ डेटाबेस ऑफ आधार कार्ड ऑफ ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू फाइंड पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना है देन अगर आप बैंक में भी जाते हो तो अगर आप आपका अकाउंट नंबर देंगे तो उनके पास जो डेटाबेस होगा उसमें से वो आपके अकाउंट नंबर से आपके नेम एंड आपका डिटेल जान सकते हैं. राइट, सो दिस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न जनरेटिंग अ सिंपल क्वेरी. ठीक है, अगर आपके पास डेटाबेस है टेबल का, उसमें से आपको सिंपल क्वेरी जनरेट करनी है कि सपोज इस टेबल में से मुझे सुरभि, यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि सुरभि नाम की गर्ल हो, वो कॉलम देखनी है. राइट, सो आई डोंट हैव प्रॉपर टेबल बट लेट्स ट्राई टू डू दिस. आई एम ऑन टेबल 3, आई एम ऑन टेबल 2. ठीक है, मैंने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया है. इसे आर एबल टू सी देन एक्स सरनेम बाय फादर्स नेम जेड, इसकी जगह आई गेस नेम सेट कर लेने चाहिए. पटेल सुरभि. दोषी प्रिया. देन मेहता दृष्टि. मैम हैव यू चेक फोटो पटेल ऋषि. Okay. Now let's start how to create a query. First of all, I am saving this Control S, and then steps are given in your textbook, page number 52. Bold fonts are there. First of all, database 1 open and then create. Where is this option? Yes, this is available in menu bar. If you are able to see on my screen there. Create, right? I am clicking on create. Once I click on create, you can see query design option is available here. Is it available anywhere? Query design. Yes, here. Query design, right? I am clicking on this. Once I click on this, they are asking that you have to create query on which table. आपको कौन से टेबल में ये query create करनी है? So मैम हाँ बोलिए. मैम मैं ये कह रहा था कि आप कंप्यूटर में क्या कंप्यूटर में ज्वाइंट हुआ ना, कंप्यूटर में से प्री कॉन्फ्रेंस में कंप्यूटर में क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा है. मैम 1 मिनट में चैट में टाइप करो. Okay, ठीक है. Okay, so I'm choosing this table copy of and then giving OK. Once I click on OK, you can see. अगर आपको दूसरा टेबल भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, बट फिलहाल हम एक ही टेबल ऐड करेंगे. We are on page number 54. ठीक है. अच्छा, join FCC from computer. I was earlier also told you that अगर मैं ये जो डेस्कटॉप है उसमें से FCC ज्वाइन करूँ तो आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल होगी. दैट आई नो, बट इसमें कैमरा ही नहीं है. ये डेस्कटॉप जो है उसमें कैमरा नहीं है. जैसे
आप लैपटॉप में से यूज करते हो तो लैपटॉप में कैमरा होता है वैसे, तो इसमें स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन वर्क नहीं करता है। जो स्कूल में पीसी है उसमें स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन वर्क नहीं करता है, ठीक है। अगर अभी के लेटेस्ट डेस्कटॉप अगर हम बाई कर रहे तो गुड कॉन्फ़िगरेशन वाले तो उसमें हो जाएगा। हाँ जी बेटा। मैम तो आपके पास पर्सनल लैपटॉप है? पर्सनल लैपटॉप नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल, स्कूल में नहीं है। ठीक है। When I started my classes at that time I show you my desktop that is at home. मिलन, हाँ जी बेटा। मैम स्क्रीन शेयरिंग के लिए उसके लिए कैमरा, उसके लिए नहीं बेटा, F6 में, अरे बेटा F6 में वर्क नहीं करता है, ठीक है। कैमरा तो चाहिए कि जो वो स्क्रीन शेयर कर सके, ठीक है। इट्स नॉट वर्क इन दिस लैपटॉप। मिलन, अगर आप आपका लैपटॉप मुझे देंगे तो आई कैन डू, ठीक है। आई ट्राइड इट ऑलरेडी। लेट्स मूव ऑन द पेज नंबर 50. If you see here, then yes, where we was creating a query, right? So you can see here field, we have to choose field. I am choosing the surname, ठीक है। And then table, from which table? Copy of table 2, and then criteria. So I want to search Patel, ठीक है। That surname I want to search, so I am typing Patel here, and then I am going in view. Once I click on view, you can see I guess हम लोगों ने पटेल सरनेम से 2 एंट्रीज टाइप की थी, तो दोनों एंट्री यहाँ पे आ गई। सिंपल, अंडरस्टूड, यस और नो? अभी आपको क्वेश्चन होंगे कि अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया वाली क्वेरी सर्च करनी है, देन व्हाट कैन यू डू? So again we have to go in datasheet view. In this I can type here, if you are able to see in your textbook, then Surbi, this search word Surbi, first name Surbi, ठीक है। तो Surbi करके डेटा यहाँ पे आ गया, देखिए। I am not taking textbooks example because if you want to do practice at home, then you can use textbook. Okay, now again I am going in criteria and they use day scholar. So I am choosing day scholar from here. Okay, and criteria true or false. Okay. True or yes, you can type yes also, right? Then you can see Patel surname is there and day scholar. देखो, इसमें जब हमने टेबल यहाँ टाइप किया था तब 2 entries are there, here and here. One is day scholar yes and second one is day scholar no. So you can see in query, जिसका day scholar yes था and जिसकी surname Patel थी, वो 2 entries visible हुई। Understood? Let me change in this. मैं इसमें चेंज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे डे स्कॉलर ओके कर देती हूँ, फिर ये क्वेरी को रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश फ्रॉम हियर। अगेन गोइंग इन व्यू, थ्रू एग्जाम व्यू, ठीक है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो वो दोनों में यस मैंने कहा था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्राइटेरिया, क्वेरी जनरेट करने का मल्टीपल क्राइटेरिया। नाउ हाउ कैन वी सेव दिस? सिंपल, इफ यू वांट टू सेव दिस देन फाइल, सेव एज query 1, ठीक है, एंड type as a query, form or report. So I am choosing your query and then giving OK. Once I click on this, you can see query is generated here. Understood? Simple, बस इतना ही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट
ये जो बड़े बड़े आधार कार्ड, वोटर आईडी, वो सब मैनेज करने के लिए वो लोग जब यूज करते हैं ना, तब ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Yes. Yes. Okay, do practice at home. If you have any query, then you can ask me. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप आपकी स्क्रीन में अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कंप्यूटर ऑन रखिएगा. I will see your screen and then we will find out the query, right? In next period we will learn about the creating the form using wizard. अगस्त से आप मुझे पूछ रहे थे ना कि मैम इनसे फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं. Yes, that we are going to learn in next period. Okay? Okay. Okay, मिलन आप कब दे रहे हो आपका लैपटॉप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you going to give me your laptop for the FCC? No, ma'am. No, ma'am. Do you have? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then if you wish, then you can give it to me for a few days. ओके बेटा, ये जो डेस्कटॉप होता है ना, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है. कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होते हैं उसमें एफसीसी में स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन वर्क करता है, राइट? किसी में नहीं करता है. ठीक है, अगर मैं कैमरा ऑन रखती हूँ तो ही मेरा फेस आपको दिखेगा, राइट? बट इसमें कैमरा ही नहीं है, तो अगर आपको मुझे देखना है देन हाउ कैन यू? वैसे स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन भी उसमें वर्क नहीं करता है. Earlier when I was taken classes from the home, at that time I was using desktop only, but उसमें वो सारे configuration थे. Okay, bye, have a good day.